Welcome back. I'm Mrs. Parsha and you are with me in Saraswati coaching classes. And we are learning the chapter of class 8 science, microorganism, friends and food. In previous session, we have discussed that what are the major group of the microorganism, how they are useful for us in short and how they are harmful for us. And we were talking about in detail that how microorganisms are useful for us. In that we have discussed that it is help us to making the curd, it is help us to making the alcohol and alcoholic products, even the all bakery products. Now we will talk about very important topic, and that is antibiotics. Okay, this word you may have listened many of the time from many of the people, especially doctors. What is this antibiotic? This antibiotic is a kind of medicine which we have been given when we are sick, we are ill, or we are infected by any pathogen, any microorganism. Antibiotic किससे बना होता है? Antibiotics, all antibiotics, for example, streptomycin, erythromycin, tetracycline, पेनिसिलिन, ये जो सारे these are very few, I'm giving you example, इसके अलावा और भी है. So these all are prepared from microorganisms. Okay, how does this antibiotic work? These antibiotics are specific for specific type of disease. If I am suffering from the viral fever, common cold, that time the antibiotic given to me is different. If I am suffering from like vomiting, loose motion, stomachache or something else, that time the antibiotics are given by the doctors are different. Clear? So antibiotics are a special type of medicine which is manufactured from the microorganism to treat different illness, different infections. इससे क्या होता है? When we are taking the antibiotic, that time जो हमें इन्फेक्शन हुआ होता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है एंड वी आर गेटिंग रिकवर्ड सून. हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, हम हेल्दी फील करने लगते हैं. अंडरस्टैंड? एंटीबायोटिक इज अ स्पेशल मेडिसिन विच इज टेकन ओनली आफ्टर द इन्फेक्शन. बीमार होने के बाद ही लिया जाता है, नॉट बिफोर दैट. अंडरस्टैंड? मीन्स जनरली आपको पता है कि इस बीमारी के लिए ये एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लास्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया था. अगर नेक्स्ट टाइम आपको सेम टाइप के सिम्टम्स या इलनेस फील हो रहा है, सो यू कैनॉट गो टू द एनी फार्मासिस्ट एंड यू कैनॉट आस्क फॉर द सेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. व्हाई? इट इज एक्सट्रीमली रिस्की बिकॉज मेनी डिसीज कैन हैव कॉमन सिम्टम्स. जनरली आप देखो हर कोई डिसीज में फटीक होना, हेडेक होना, फीवर होना, ये कॉमन सिम्टम्स है. इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर टाइम वही इलनेस या वही डिसीज हुआ है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्मफुल टू टेक एनी एंटीबायोटिक विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रैक्टिशनर, डॉक्टर. एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में हमारा जो इन्फेक्शन है वो रिडक्शन का काम करता है, इसलिए उसको प्रॉपर टाइमिंग में लेना बहुत जरूरी है. When you are going to any doctor, that time doctor is always advising you, ये सुबह शाम लेना है, ये 3 टाइम लेना है, ये 1 गोली लेनी है, ये आधी गोली लेनी है, या फिर ये 1 टेबल स्पून लेना है, या फिर वो 10 ml लेना है, 5 ml लेना है. डिपेंड्स कि आप अडल्ट हो या किड हो और बेबी और. सो according to that they are prescribing the dosage of that antibiotic. We must take that antibiotic in that particular amount. If you are taking less than that, it will not act effectively to recover your body. If you are taking more than that, it will definitely harm your body, because the amount, the dose which is prescribed to you is depend upon your age, is depend upon your intensity or the severity of the infection. Clear? And it depend upon your own immune system. आप कितने healthy हो उस पे ये depend होता है. Understand? 2 things I told you. Without prescription, we are not supposed to take any antibiotic, right?
रिगार्डलेस ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन आप कम या ज्यादा मात्रा में भी उसे ले नहीं सकते. अंडरस्टैंड? वी कैन नॉट यूज सेम एंटीबायोटिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज. आपके पास एंटीबायोटिक ऑलरेडी पड़ा हुआ है घर में, तो आप उसको ले नहीं सकते बार बार, बिकॉज इट इज डिजीज स्पेसिफिक एज आई टोल्ड यू. क्लियर? देन व्हेन वी हैव suffered from any type of disease, that time we must visit to the doctor only. Without doctor's advice, we should not take any type of medicine. आपने बहुत बार देखा होगा, सिंपल सा सरदर्द हो रहा है, गो टू फार्मासिस्ट, टेक वन मेडिसिन एज अ टैबलेट कैप्सूल, कुछ भी वो ले लो, रिलीफ हो गया. We are become addicted. We are not doctored. We have not studied into that medical field. How we will come to know कि कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, मेरे इस इलनेस के लिए, कौन सा नहीं है. So we are indirectly inviting many health problems by doing such activity. Then when we are ill, that time when we are going to the doctor, that time whatever treatment doctor is given to you, that complete dose, that complete treatment we have to take. Generally what happens, हम मेडिसिन लेते हैं, 2-5 दिन का ट्रीटमेंट दिया, 3 days we are taking, then after 3 days we are feeling better, and then we are skipping that rest of 2 days dose. मुझे अच्छा लग रहा है, मैं क्यों खाऊं? ऐसा नहीं होता. When we are taking complete dose, that time our body is completely healed from inside, so that if same type of disease or pathogen will attack, that time you will not easily get susceptible for that. आपकी बॉडी अच्छे से उसके लिए रिपेयर होगी. Clear? That's why antibiotics are very important. The Alexander Fleming, you might have listened this name. This scientist has invented the antibiotic from the Penicillium notatum. ये फंगस स्पेसीज है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेम एज पेनिसिलिन, एंड विच इज एक्ट as the antibiotic for many fungal infections, many fungal diseases, as well as it is act as the complementary antibiotic in many illnesses. Clear? Antibiotic topic is clear to you all. Then come toward the vaccine. ये इसका पूरा उल्टा है. मतलब कैसे? एंटीबायोटिक वी आर कंज्यूमिंग आफ्टर फॉलिंग इल, बीमार होने के बाद ही लेते हैं. ये चीज ऐसी है जो हम प्रायर लेते हैं पहले, और मोस्टली इन चाइल्डहुड. वैक्सीन इज व्हाट? इट इज ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट कौन से? जिनसे डिसीज होता है वो वाले. सपोज पोलियो वैक्सीन होती है, राइट? 2 बूंदे जिंदगी की, राइट? ये वो जो ड्रॉप होते हैं उसमें क्या होता है? जनरली पोलियो, आपको पता होगा, पोलियो इज अ वायरल डिसीज. पोलियो इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस. उसका नाम ही पोलियो है, वायरस का नाम पोलियो वायरस. सो इन अवर लाइफ वी शुड नॉट गेट ससेप्टेबल फॉर दिस पोलियो वायरस. दैट्स व्हाई द डेड और वीक और हाफ किल्ड वायरस इज इंजेक्टेड इन अवर बॉडी और अलाउड टू एंटर इन अवर बॉडी. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वो वायरस हमारे बॉडी में डालते हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे WBC है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं. वो वायरस जो है पोलियो वायरस, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और वो अडेप्ट हो जाते हैं कि जब कोई ऐसे टाइप का वायरस हमारे बॉडी में रियली अटैक करे तो ये जो है हमारे WBC, हमारी इम्यून सिस्टम इसको किल करने के लिए रेडी हो जाती है. मीन्स टू बिल्ड द इम्यूनिटी सिस्टम अगेंस्ट एनी डिसीज, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो, द वैक्सीन इज गिवन. You may have noticed that most of the vaccines are given in the childhood. मतलब 8 से 10 साल तक हमारा पूरा वैक्सीनेशन हो ही जाता है. वो कम टाइम इंटरवल के बाद होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ के बाद 8 दिन के बाद बच्चे का वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है. दिस वैक्सीनेशन इज गिवन अगेंस्ट मेनी डिसीजेस लाइक रैबीज, लाइक पोलियो, लाइक हेपेटाइटिस, लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स. ऐसे सारे वायरल फंगल इन्फेक्शन डिसीज वाले डिसीज के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन दी जाती है. Nowadays, many advanced boost vaccinations are also present, which can be prevent different type of diseases. So these vaccines, how does it work actually? As I told you, when these vaccines are entered in our body,
that time body is getting completely prepared for to fight, to resist or to get cup of these pathogens. वो पैथोजन क्या होता है? एक्चुअली डिसीज कॉजिंग सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इन जनरल टर्म में पैथोजन बोलते हैं, राइट? सो इन पैथोजन को किल करने के लिए किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में वैक्सीनेशन इज गिवन इन द अर्ली स्टेज. अभी अर्ली स्टेज में क्यों? व्हेन वी आर इन ग्रोइंग पीरियड, दैट टाइम जो हमारा चाइल्डहुड है ना, childhood is mainly working on the building of our immune system than that of adulthood. ठीक है, हमारा जो टीन एजर का जो एज है उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप होना कम हो जाती है. वो डेवलपमेंट का काम कब होता है? सिंस बर्थ टू द एडोलसेंट पीरियड जब स्टार्ट होता है आपका 10, 12, 11 एज, जहां से एडोलसेंट पीरियड, टीनेजर पीरियड स्टार्ट होता है, उस पीरियड में हमारी इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप होती है. इसीलिए उसी दरम्यान ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन दिए जाते हैं ताकि इस टीनेजर के बाद का जो पीरियड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला पीरियड हो और हम कभी बीमार ना पड़े. इसीलिए वैक्सीनेशन देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Whenever the government is running the campaign against these diseases in the form of vaccination campaign, we must take that vaccine. We should not miss any vaccine which is prescribed. जो पेडिट्रिशियन है उनकी जो फाइल होती है, देखो हम जब बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसकी फर्स्ट पेज पे, फाइल के फर्स्ट पेज पे एज वाइज वैक्सीन का नाम लिखा रहता है. एज वाइज, फॉर एग्जाम्पल 1.5 month फर्स्ट ट्रिपल, 2.5 month BCG, like that. So we must follow all that and we must tick which we have given or which has been missed because of any problem. Though it is missed, later on we can give, but it's very mandatory. Nowadays you have realized that many unknown type of diseases are arising. हैजा आ गया, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया. तो उसके अगेंस्ट बॉडी को डेवलप करके रखने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना है और उसके लिए क्या जरूरी है? वैक्सीन. ठीक है, सो क्लियर अबाउट वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स. You have many time a question depend upon the difference between antibiotic and vaccine. So these 2 points you read very carefully and try to differentiate it in your own words. The next use of microorganism is soil fertility. When the microorganisms are present in the soil, for example, blue-green algae, nostoc, anabena, एजोला, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो एल्गीज है. वो क्या करते हैं? दे आर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड टू द प्लांट टू प्रोड्यूस द नाइट्रोजन. सो अलोंग विद दैट, ये तो एक हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये हो गया. Along with that, when microorganisms are present in the soil, that time they convert the complex material into the simplest form in the process of decomposition. That simplest form of nutrients are again made available for the plants for their growth. Understand? It also helps to increase the humus into the soil, and that humus is enrich the soil fertility. जिस soil में humus की quantity ज्यादा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, उसकी फर्टिलिटी हमेशा अच्छी होती है. फर्टिलिटी अच्छी होने से क्या होता है? When the soil is more fertile, that time the soil is given, और वो जो लैंड है उसमें मैक्सिमम यील्ड आता है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता है. इसीलिए तो सॉइल को फर्टाइल, अगर नहीं है सॉइल तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नली उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं. क्लियर? बट इफ योर सॉइल इज रिच विथ ह्यूमस, रिच विथ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सो नेचुरली इट बिकम्स मोर fertile. So you need not to add any additional chemical fertilizer. So microorganisms are also helpful to increase the soil fertility. Now come to the last, that is cleaning environment. Yes, it's very important. These all topic you keep in mind very properly. Why? Because you have all this topic in detail in class 9 and 10 as well. So microorganisms are the decomposers. For example, fungus.
bacteria. They are feeding on dead and decaying matter as a scavengers. And when they are feeding on dead and decaying matter, that time what happens? They are losing the nutrients from that material, dead and decayed material, into the simpler form, and that get again mixed into the soil. Clear? And from soil it is made again available to the plants which is growing in that part. Along with that, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिलीज होता है बल्क ऑफ क्वांटिटी में, उसको डिकम्पोज करके, उसको डिग्रेड करके, उसको फीड करके वो इतना जो बल्क है वो उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं साइज में. अंडरस्टैंड? विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल सब्सटेंस, एनी हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस. Without producing all these things, they convert that whole biodegradable waste into the simpler form, and which is beneficial only. So in this way, and the previous which topics I have already taught you, in this way microorganisms are very helpful for us. Understand? Now in next session we will talk that how microorganisms are harmful for us. Till that time, you read it, you write your points on this, and keep on studying. Thank you.